the class. Okay, good evening, everyone. Once again to this session. So we are going to study the next topic in the unit of advertising and marketing communication. Yesterday, we studied about media planning and budgeting. Very interesting chapter, one of my favorite, I would say. And today we are going to understand a very interesting part, that is advertising and creativity. ठीक है, बहुत quickly ये chapter finish करेंगे, बहुत छोटा सा topic है. So we'll quickly hover over the topic. Okay. So how will you make your advertisement look different? So for example, if you are owning a clothing brand, okay, sustainable brand, affordable brand, how will you make it, different? How will you make your brand advertisement stand out in comparison to your competitors? How will you do it? Can you tell me any first thing that will come to your mind when I say that we all are owners of shopping, I mean clothing brand, each and every one. We are selling cotton suits. But how will the customer make sure that my brand is different, Sonam ka brand is different, Selva ka brand is different, and Pracha ka brand is different? How will you make sure that you are, you are attracting the correct set of audience to your brand? Okay, follows the trend. What else? Innovation, very good. जिनके ब्रांड्स के नाम लिए केवल उन्होंने आंसर दे दिया. What about others? Yes, USP. What is the full form of USP, Pracha? Can you tell me? Oh, she left. What is the full form of USP? Can anyone tell me? If we say that we want to highlight the USP of our brand, unique selling point. Very good. So USP is the one thing that makes you different from each and every brand. And if we talk about advertisement, it's about selecting the correct USP of your brand and then highlighting it. So for example, if I say that I also own a clothing brand, but I offer exclusive collection of pastel colors, or Sonam would say that I have, the affordable options. Okay. The other one would say that these are handloom pieces. The other one would say that these are sustainable pieces. So what is this? We are trying to, bring a fresh mindset to the people, because clothing mein to bahut hi zyada competition hai. Then how will you make sure that the customers are purchasing from you? So you are highlighting the USP in a creative manner. So creativity in advertising refers to the ability to generate fresh, relevant, and effective ideas that can capture attention, connect emotionally, and persuade the target audience to take action, buy, remember, and share. So most of the time of Diwali, we see that brands are, making some ad films that are emotional, jitse audience connect kar pa rahi hai, and they are trying to throw the idea emotionally, and we as an audience also get attracted towards it. So what are they doing? They are trying to capture your attention emotionally. Okay, so creativity is not just about being different, it must also be strategic, aligned with the brand's message and goals. So I gave you one example. I remember previously in one of the chapter that if we talk about skincare brands, what are the brands doing as of now? They are playing on the scientific names of the ingredients, like serum isme ye hai, wo hai, ADHD, whatever. So they are playing on that. So we as customer think, wow, इनको अपने brand के बारे में इतनी knowledge है. They have so much knowledge about skincare. That means इनका brand अच्छा होगा. So let's start using that. So that is also one of the USP that they are strategically using to capture your attention. Okay, so importance of creativity in advertising: breaks through clutter in a crowded media environment, makes advertising memorable. There are certain rather brands or ad campaigns जो मैं आज तक भी याद है, whether it is Parle Ji की girl or whether it is Cadbury के ads. I don't know, आप लोग तो शायद बहुत छोटे होंगे. There used to be ad of Cadbury जिसमें पूरी उन्होंने जो पूरा सेट था वो चॉकलेट का बना दिया था. मतलब it was definitely animation, और उसका एक गाना था, कितना मजा आए रे दुनिया कैडबरी की हो जाए रे, डेरी मिल्क के पंछी डेरी मिल्क के पेड़. सो इट वाज वेरी मेमोरेबल, और बहुत टाइम तक वो चलता रहा एड कैंपेन, और बच्चों उससे बहुत रिलेट कर पाए. Okay, that's how it created emotional connection with the audience, builds a strong brand identity. मतलब me being in my, I don't know, 30s, I remember मुझे वो clearly song पूरा याद है. So what they did, they tried to, मेरे दिमाग में उन्होंने वो अपना brand fit कर दिया, वो वाला गाना fit कर दिया. I can still sing that song very अच्छे से. And same case goes with you. आपका भी कोई favorite brand ad campaign जो आप अभी भी बहुत अच्छे से वो गाना गा सकते हो.
It increases engagement and shareability, especially on social media. It drives consumer behavior, ठीक है, because it tries to influence the decision. ये गाना सुन के मैंने तो बहुत जिद करी थी कि भाई मुझे कैडबरी चाहिए और मेरी भी दुनिया काश ऐसी हो जाए. तो it made me think that in that way because I was their target audience. Okay, so this is one of the process that creative process and advertising. This is how it looks like. Okay, so first, what happens? Preparation is the first phase where you research and you collect the data about product, target audience, market, competitors, and brand values. Okay, then what you do? You incubate. मतलब आप you fill in the data. Oh, sorry, fill in the idea. Let the idea simmer in subconscious mind. No force thinking ideas develop in the background. So अगर अभी भी मैं अगर आपके सामने if I'm singing that particular song, so the whole ad is being played in my subconscious mind क्योंकि मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मेरे दिमाग में वो ad अभी फिट है. तो जैसे ही मैंने आपको याद किया, मेरे दिमाग ने तुरंत मुझे सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत वो गाना मुझे क्लिक करके दिया कि भाई तुझे गाना अभी भी याद है और अभी भी बैक ऑफ द माइंड मेरे वो पूरा एड चल रहा है. सो दिस इज व्हाट इंक्यूबेशन. द ब्रांड वाज सक्सेसफुली इंक्यूबेटेड इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड. Then illumination, the aha factor, when the idea or creative insight strike. Me being a, I think 10-year-old or 13-year-older, वो मेरे दिमाग में फिट हो गया और मुझे लगा कि हाँ this ad is made for me. और मुझे वो एकदम से I'm just trying to give you an example that I connect the most. You can imagine the brand that you connect with the most. ठीक है. Then finally होता है verification. Testing, refining, and checking whether the idea fits the brief and can be executed practically. Then what do they try to do? वो फिर ये देखते हैं कि is it executable? क्या वो एनिमेशन अगर मैं बनाना है जिसमें मुझे पूरी दुनिया पूरा सिटी चॉकलेट की दिखानी है, इज इट डूएबल? क्या मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं? और दे कैन वर्क एज पर द ब्रीफ ऑफ द क्रिएटिव डिजाइनर. सो दिस इज हाउ द creative process and advertising works. Now some of the elements of a creative advertisement. So these are the qualities that makes an ad creative powerful. First one is very important, originality. अगर एक ही कोई सोडा ड्रिंक का एड है, उस सब में वही दिखा रहे हैं कि डेयरिंग, दे आर ऑल राइडिंग बाइक्स, दे आर ऑल राइडिंग ऑन अ वेरी टफ रोड और ऐसा. सो क्या हो रहा है, कुछ फ्रेश निकल के नहीं आ रहा. और जैसे ही तुरंत they will try to put in some kind of efforts and try to bring something new, वो तुरंत ही आपके attention ले लेगा. Flexibility can present the same ideas in different way. Nowadays it is very important कि आपका जो एक ad है वो रेडियो पे भी चल जाए, टीवी पे भी चल जाए, प्रिंट में भी वैसा ही आ जाए और आपका डिजिटल में भी वैसा ही चल जाए. ठीक है. तो दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी मीन. ऐसा नहीं कि हमने एक क्रिएटिव लाइन लिख दी जो केवल न्यूज़पेपर के लिए वैलिड हो, वो सोशल मीडिया पे ना चल सके. देन उसके बाद भी है एलैबोरेशन. इट इंक्लूड्स अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स विल सरप्राइज ट्विस्ट. सो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर के एड्स होते हैं जो फुल पेज एड होते हैं, आप उसको ओपन करते हो. मेरे को याद है क्लिनिक प्लस का एड था. दे फिट इन अ पर्टिकुलर पॉकेट इन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर और उसके अंदर से क्लिनिक प्लस का एक पाउच निकला था. ठीक है. तो एक सरप्राइज था, एक ट्विस्ट था और उसने सबकी अटेंशन ले ली. Then synthesis combines unrelated idea into something meaningful. Like vigorously ad नहीं देना कि हमारी सेल चल रही है 50% हम लोग ऑफ देखना है, पर नो, उसको भी वो कुछ ना कुछ ट्वीक करके they will try to grab your attention. Artistic value, it should be aesthetically pleasing, use of colors, visual, music, or even people. Then some key roles and responsibility in advertising team are creative leaders, who leads the creative team and supervise the overall creative vision. Okay, so these are some of the people who are responsible in an advertising agency. Just give me a moment. Okay, so I was saying these are some of the people who are part of the creative team in an advertising agency. So there's a creative leader जिसका पूरा creative vision होता है. Copywriter होता है जो कि जितनी भी text होता है आपके ad में, whether it is slogan, body copy or any kind of jingle you want to write, वो सब copywriter लिखता है. Then there is an art director who designs the visual elements, layout, graphics, image and typography. Okay, so these are some of the two of the ads, case studies that I have added over here so that you can also
आपके दिमाग में भी क्लिक हो जाए. सो वी नो दैट अमूल के एड्स बहुत फेमस है दुनिया में, जो भी चल रहा होता है, इवन इंडिया में कुछ भी चल रहा होता है, दे मेक श्योर दैट दे आर मेकिंग देयर मार्क इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, और वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एड जरूर बनाते हैं, कुछ सरकास्टिक वे में, कुछ ह्यूमर डाल के, ठीक है, कुछ पंच डाल के, या पॉलिटिकल कल्चरल रेफरेंस डाल के. ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव एग्जीक्यूशन विद अ फ्लेक्सिबल मैसेज. अमूल का कोई एक एड नहीं चलता आ रहा बहुत टाइम से. ओनली द आई थिंक वन जिंगल दैट आई कैन इंस्टेंटली रिकॉल इज अमूल दूध पीता है इंडिया. दैट इज ऑल्सो अमूल दूध, ठीक है, बट दिस इज व्हाट अमूल बटर. सो दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद द करंट प्रिवेलिंग इश्यूज, ठीक है. देन वी हैव नाइकीज जस्ट डू इट. पावरफुल एंड सिंपल स्लोगन है, बट ये हर जगह फिट इन हो जाता है. इट एनकरेजेस एक्शन, एम्पावरमेंट, एंड दे ऑल्सो यूज एन इमोशनल स्टोरी टेलिंग, लाइक एथलीट्स की या फिर पैरा एथलेटिक्स, उनकी स्टोरी वो लोग यूज करके दे यूज इट फॉर देयर एड्स. कंबाइंस ओरिजिनलिटी, इमोशनल अपील एंड ब्रांड आइडेंटिटी. सब कुछ मिक्स, तो आपका एड डेफिनेटली हिट हो जाएगा. Okay, so these are some of the example of the ads. So now that we have understood that how creativity matters in advertising, let us understand what is the importance of language in advertising. So when you are watching a television ad, कभी कभी उसका म्यूजिक हमें अट्रैक्ट करता है, कभी कभी उस एड में अगर शाहरुख खान है या रणबीर कपूर है वो हमें अट्रैक्ट करता है. एंड लेकिन फिर भी जो आज तक भी सबसे प्रिवेलिंग चीज है वो है आपके एड का टेक्स्ट. वेदर इट इज इन न्यूज़पेपर, नॉट ऑफ कोर्स नॉट इन रेडियो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो एक पूरे ब्लैंक फर्स्ट पेज न्यूज़पेपर में छोटा सा एन लिखा हो और उसके नीचे नेटफ्लिक्स लिखा हो, ठीक है, तो वो केवल टेक्स्ट के थ्रू यू कैन रिजेंबल द ब्रांड्स अ लॉट. Okay, now let's understand how language also plays a very important role when we speak about advertisement. So advertising is a form of communication. पहले समझते हैं. So advertising is more than just selling product. It's a special type of communication that persuade. Why? Because advertisement के through ही हम persuade होते हैं ताकि we go in the market and we buy that product. We start liking it. Remember diffusion of innovation theory? It is rhetoric. Applies rhetorical devices like reception, emotional words, catchy slogans, or appeal to logic, emotions, and ethics. Now, who will tell me the meaning of rhetoric? I think it is the fourth or fifth time we are studying this particular word, rhetoric. Who will tell me the meaning of rhetoric? We have studied this ample number of time now. I want to understand if you remember the meaning of rhetoric. Persuasive. Okay, very good. Anyone else? परसुएशन होता है बट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न और स्पोकन वर्ड्स का इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. तो अप्लाइज रियोथोरिक डिवाइसेस लाइक रेपिटेशंस में अगर हम बात करें, कोई ऐसा एड जो निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है, तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ट्राइंग टू रिपीट द वर्ड्स सो दैट आपको वो जिंगल याद हो जाए. देन इमोशनल वर्ड्स, catchy slogans to appeal the logic, emotion, and ethics. ठीक है. Symbolic ads often use symbols like logos, colors, gesture. They can carry deeper meanings beyond literal words. Now, तो you belong to Gen Z, तो of course आप लोग बहुत जल्दी इससे connect करोगे कि there are certain brands जिनसे कुछ कलर्स कनेक्टेड है, जिनसे कुछ जेस्टर कनेक्टेड है. वो जेस्टर करते ही आप समझ जाते हो कि ठंडा मतलब कोका कोला, सब मतलब मेरे लिए तो यही है, लेकिन हो सकता है आज की जनरेशन जो आप लोग हो आपके लिए कुछ डिफरेंट हो. So, for example, red color often symbolizes passion and urgency. Nike swoosh symbolizes movement and speed. That's why they use this particular color, red. Now, if we talk about semiotics in advertising. Semiotics क्या होता है? It's the study of signs, symbols, and how we interpret meaning. ठीक है? ये एक, it's also a type of communication. It's also a type of barrier. ठीक है. And how? Now we'll see a semiotic type of communication and advertising. So signs, anything that stands for something else, like image, sound, gesture. कौन सा brand है ये? If I do this, which brand is this? You must be seeing a lot of hoardings. 3 of the very popular actors doing this in their ads. बहुत सारे हिंट दे दिए मैंने अब तो. बताओ कौन सा ब्रांड है ये? Which brand am I talking about? Yes, absolutely. I'm talking about
क्योंकि वो ऐसे करके खड़े होते हैं. So this is the gesture that is being connected to that particular ad. Symbols, deeper cultural meaning like dove symbolizes peace क्योंकि पूरा white है. Then meaning making, ad combine words, visual, colors, music to send messages beyond the literal meaning. So for example, अमूल का ही मदर डेयरी का एक बहुत पुराना एड था जिसमें उन्होंने गुजराती कल्चर से उसको कनेक्ट किया था कि हाउ, बिकॉज आई थिंक अमूल का था या मदर डेयरी का था, क्योंकि वर्गीस उसके फाउंडर थे और वो गुजरात से थे और उन्होंने वहां से कुछ कनेक्ट किया था एंड दे यूज गुजराती कल्चर टू कनेक्ट विद द सेम ब्रांड. सो दैट इज हाउ दे आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग कल्चर देयर. Then Apple's logo, an apple with a bite, always represent innovation and simplicity. Simple Apple के आज आपने कभी भी देखे हो, they are very simple. Simple दो टेक्स्ट दे रखे होते हैं. Not आपको कभी ऑब्जर्व करना, they have never used any celebrity, they have never endorsed any kind of celebrity or famous face. They simply do an ad with generic faces. But केवल उनका एक लोगो है जिससे क्लियरली हम बता सकते हैं कि एप्पल है और ये एप्पल नहीं है. Understanding semantics help advertiser design powerful layered message that audience decode emotionally. Okay, so very important in advertising. Now there are some challenges when we talk about language in advertising as well. When ads move from one language culture to another, many problems can happen, right? Linguistic nuances, some words do not translate easily because of grammar, tone or double meanings, right? Remember I told you, अगर कोक का अगर कोई एड कैंपेन हो रहा है तो नॉर्थ में उसका जो फेस होगा वो डिफरेंट होगा और साउथ में उसका जो फेस होगा वो डिफरेंट होगा. व्हाई? बिकॉज द एडवर्टाइजर्स वांट कि लोग उस एक्टर से कनेक्ट करें और अपने ब्रांड से कनेक्ट करें. सो जरूरी नहीं है कि अगर सलमान खान इज द फेस ऑफ कोक, सो नॉर्थ के लोग तो उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, पर हो सकता है साउथ के लोग ना हो पाए, तो साउथ के लिए दे विल यूज अ साउथ इंडियन एक्टर लाइक अल्लू अर्जुन. ठीक है, तो यू विल सी दैट इफ यू विल गो टू पंजाब यू विल सी दिलजीत दोसांझ बीइंग दैट फेस. If you go to northeast you will see somebody else. आप travel करोगे तो you will see कि कोक के faces बहुत different है अलग अलग part of the world में. Then idiomatic expression phrases like break a leg meaning good luck doesn't make sense if translate literally. ठीक है, very very generic theme this is. Then cultural context की बात करें, humor, gestures, colors, religious symbols mean different things in different cultures. For example, white color is the color of mourning in China, but purity in the West. Okay? You have seen this in a movie called PK, right? Remember? So these are also some of the case studies that we have jotted down for you. The one being Pepsi. Pepsi का एक campaign हुआ जिसमें उनकी tagline थी "Come alive with the Pepsi generation." जिसमें अगर उसको चाइनीज में इंटरप्रेट किया, जब ट्रांसलेट किया गया, so it meant Pepsi brings your ancestors back from the dead. So which was very offensive and scary culturally. ठीक है, so that's why ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है and that's why it is very important कि जो चाइना की टीम है कोक की, वो पेप्सी की, वो उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सके ताकि वहां के लोग उससे कनेक्ट कर पाए. Then अगर हम KFC की बात करें, when KFC went to China, we all know that we know English, but they don't know. Finger licking good, which was translated into eat your fingers off, which is wrong. So this can be bad translation case study. जिससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और कभी कभी पूरा पूरा एड कैंपेन वहां से हटाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स. Okay, this is it for this quick chapter. I hope everybody is clear with the topic. Just write yes or no in the chat box so that we can start with the question answer. All right, chalo. Okay, the first question on your screen. In context of advertising creativity, which of the following term refers to unexpected connection between two different ideas? Originality, synthesis, elaboration, or flexibility? In context of advertising creativity, which of the following terms refer to unexpected connection between two different ideas? Please read the question properly.
Okay, let's understand it in the form of a आपके घर का डेकोरेशन हो रहा है, राइट? आई मीन इंटीरियर डेकोरेशन हो रहा है. तो when you are trying to collaborate ideas of yours and your parents idea, और आप उसको collaborate करके अपने घर का इंटीरियर करा रहे हो, तो what are you trying to do? You are trying to do collaboration. ठीक है? So it is what? It is an act of combining elements from different idea and making it one. So literally इसका मतलब होता है synthesis. ठीक है? So please note down if you don't know. Synthesis is the literal meaning of this particular term. All right, chalo, let's go to the next question. Okay, it's not very अच्छे से frame. Match the role with the function in an advertising creative team. Copywriter का role क्या होता है? Art director का role क्या होता है? And creative director का role क्या होता है? Quickly. Yes, absolutely right. Anybody else who is about to answer? 213. Very good. I like this approach, Sarojini. Very good. Okay, the next question. The 4 stages of creative process in advertising are imagination, evaluation, verification, launch, preparation, incubation, illumination, verification, ideation, promotion, evaluation, execution, planning, research, development, or presentation. We are talking about the creative process of advertising. Absolutely right. It's the option number B, preparation, incubation, illumination, and verification. Identify the correct sequence involved in advertising message localization. Adaptation, research, execution, research, adaptation, testing, testing, execution, research, execution, adaptation, research. Very easy. पहले क्या करेंगे हम? पहले we will do research of the brand, then we will try to adapt, and then we will do testing. All right, very good. That is it for today's session.